Open source is the art of turning individual brilliance into a collective masterpiece, where the code of collaboration paints a canvas of boundless possibilities and the brushstrokes of transparency create a masterpiece that echoes the spirit of shared innovation. Good evening, everyone, and welcome to TechXcelerate 2.0, a virtual technology acceleration program that will provide you with in-depth knowledge and insights into the latest trends and technologies in the industry. I, Romansh Roshan Singh, am thrilled to be your host and guide you through the program. Open source is a collaborative software development approach where source code is shared and accessible to all. You might be wondering, why should I contribute for free? Why to invest my time in this? But there's a catch. And to clear your doubts, stay tuned with us as we introduce you to our amazing speaker, Yash Sharma. He has taught and empowered 1,000 plus students in this field. He's an intern and meshmate at Layer 5. He's a beta level Microsoft Learn student ambassador and has been a GDSC tech lead. We are delighted to welcome Yash as our distinguished speaker today. With confidence, we anticipate that his wealth of expertise and profound insights will impart valuable learnings to all attendees, enriching our collective knowledge and fostering a meaningful exchange of ideas. I would like to request Yash to commence this event. Over to you, Yash. Thank you, Romansh, for. I hope my voice is clear, right? My voice is clear. Yes. Great, thank you. Thank you, Romansh, for introducing me. And I think you already said too much about me, but thank you for inviting me, everyone. And I'm really happy to share my experience with you guys. And this is a great journey. Last year, I learned a lot, and I'm really excited to share that experience with you guys. And let me know. You can also share your experience with me. I'm really excited that I am also here to learn something from you guys, and I'm really excited for that. I hope you are also excited for that. So let me know if the excitement of yours in the chat, and are you excited or not? Well, I have a haircut today, so don't mind if that not looks good. Good. yeah, Romansh, you can go ahead. Yes, you can begin. Oh, great. That's great. Okay. Do I need to share my screen or I can? Okay, I need to share my screen. Thank you. Just a second. Okay, I guess my screen is visible, right? Yes, it is visible. Great. Let me open the PPT. And we will be not following much of the PPT, but for the formality, I created that. So if हम लोगों ने इतना effort डाला इसमें, so let's use it. First of all, I would like to thank Sujal for helping me in making sure that PPT looks good and PPT is created for today's event. And yeah, so hey everyone, and I think you already are doing some great work, and today we will be learning what actually is open source. Many of you already know. We will be learning why you should contribute, uh, why you should not contribute. Also, we will also learn that part too, and how you can contribute. This is one of the important part, like how you can contribute. But before that, I would like to see the excitement of yours by making some comments in the chat, and this is this can be a like I can know so that you are excited or not. I'm just wondering that I'm not wasting your Sunday today, because if you are here, I'm probably sure that you are making sure to make yourself better person, and this is how you celebrate your weekends. And that's a great thing to come out of your comfort zone and making sure that you are learning every day and making sure that you're growing every day. How can I open chat in this? There will be a Q&A option.
Okay, so it's not opening, I guess, for me. Okay, leave it. So let's start. And मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बात करूंगा. Let me know if you are not comfortable in Hindi, or let me know if you are not comfortable in English. It doesn't matter what language we are using. The only thing matters is what actually we are learning today. So okay, let's start with some introduction of mine and why I'm here, and what I will be sharing today. So I think Romanch already shared a lot about me. For the informal introduction, that I was a LFX mentee in Mystery.io. I was also the intern at LFX, which is a cloud native based company in which we create products which are more around the cloud native environment and everything. I am also a meshmate at LFX. So meshmate is the person who guides others, kind of a mentors who come and contribute in the mystery.io. So that's a great journey of mine too. And yeah, I was also the part of coding clubs, many of the coding clubs. I also lead the club, hosted many of the events, hosted many of the hackathons organized. So it was a great journey for me too. And uh, काफी अच्छा लग रहा है इस वापस से एक कॉलेज इवेंट को ज्वाइन करके जिसमें आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा. So yeah, one more thing, I would like to ask you, if you may, अगर आप किसी भी सिचुएशन हो, it doesn't matter, you can open your camera. This actually helps to interact with you guys more. So doesn't care like कैसे भी बाल हो, क्योंकि मैं आज बाल खुद कटवा के आया हूँ, मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे कैसे हैं. So it doesn't matter. So you can open your camera, guys, and actually the reason is opening camera is a great way to start coming out of your comfort zone. क्योंकि जब आप लोग आगे चल के कोई मीटिंग्स ज्वाइन करोगे, it will be a necessary thing, and it's a great thing to build a connection with you. So like Romanch, I connected with him. Like the connection between me and Romanch is made because he already opened his camera, and that's a great way to communicate. It's always So nice to connect with the yes, faces when we actually we see. have disabled cameras for attendees because we have Oh, like 80, 90 something attendees in this meet. If we enable that, it would be chaos. oh, no worries. Uh, Yeah, okay. If that is the case, no worries. I didn't know about that. Thank you for telling me. yeah. Okay, Beba. Thank you. Okay, so let's start. I think we already introduced myself and I only introduced. So let's jump to the main topic, which we will talk about. I also have something surprise for you guys at the end of this today's session. जिसमें आज हम सीखेंगे what actually is open source and why you should contribute, how you can contribute, and why you should even care about that. Why people are asking, why people are talking about it more these days, and how you can participate, like the events in the GSOC, LFX, what are the process of LFX internship, what is the process of GSOC, because मैं कल परसों ही internships पे काम कर रहा था अपनी company के लिए. So we will be also publishing new internship for the term 1 LFX and GSOC and GSOC. And why you should, how you can participate. Like even मैं आपको insights बताऊंगा, like how the person who is the mentor all selects you on the basis of your uh, proposal, and even proposal matters or not. So that kinds of question we will talking about. And at last मेरे पास आप लोगों के लिए surprise है, so we will be talking about that too. So stay tuned. Okay, so let's come to the topic. What is open source? So in a simple definition, it's just an making your code public. Okay, so means even if I created a website, I made that public for everyone to collaborate with me on that particular code. And if they want to enhance that, they can use for free or not. Open source doesn't mean that कि कोई भी software आपके लिए free available है. It doesn't mean that. But what actually it means that the source code which is open है, जाओ उसको read कर सकते हैं. You can even collaborate on that. Even you can make it better. You can clone that. You can fork that. We will be talking about what it is cloning and forking. So we will be understanding that too. But you can use that code, modify according to you. One of the best example is Linux. Like Linux के आज के टाइम पे बहुत सारे distro हैं, like Ubuntu and Linux itself and Linux kernel के, and there are many of the like CentOS, I guess,
there are so many. So ये जितने भी versions हैं, they made by developers, open source developers. One of great example is VLC, right? One of great example is Chromium, which is like a sister of Chrome. And one of great example, there are so many examples. One of great example is Kubernetes. Kubernetes originally created by the Google, but after that, they made the open source, and open source community just they created a whole great thing. Kubernetes is an amazing thing to learn about. And uh, can you guys let me know in which year you are, guys? Like the first year, SOMO 4, or third year, or fourth year? Just to know, just to know. Most of them will be from first year. Oh, okay, great. So yes, open source then. तो ओपन सोर्स के जितने भी मैंने आपको अभी बताया जो प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर दे रियली आर ग्रेट थिंग राइट नाउ, एंड काफ़ी अच्छे इम्प्रूव हो रहे हैं. लाइक VLC में आप जाना, लिनक्स में जाना, यू कैन open the GitHub repository of the Linux, and you can see that every single day there is a PR merge, right? Like who is maintaining that? Why even people maintaining that? Like people जो हैं, they are busy in their job, they are busy in their lab. Why do they care working for free, maintaining a software? Why people should even care to contribute in something? Because they're already working somewhere 9 to 5, and why they are trying to contribute in that particular part? There can be different reasons. So one of the reason right now you should contribute is to learn things, because you are the students. You can be a company employee. So it can be possible that कि आप company employee हैं, and company आपको suggest कर रही है go, because हम जब किसी web development पे काम करते हैं तो हम काफ़ी सारी libraries को use करते हैं. One of them is React, and React में भी हम काफ़ी सारी libraries को use करते हैं, right? तो उस library को जब हम use करते हैं, it can be open source. But sometimes what actually happens is that when we are building a product can be a complex thing, and to make sure कि जो सामने से हम जिस लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं, sometimes it happens that कि वो लाइब्रेरी इतनी परफॉर्मेंट नहीं होती, because when someone is making that library for someone others, sometimes they don't care about the performance that will impact, right? Because वो केवल अपने लाइब्रेरी से कंसर्न रखते हैं, समटाइम्स नहीं रखते हैं. समटाइम्स इट मे पॉसिबल दैट कुछ फीचर्स उस लाइब्रेरी में नहीं है जो आपके प्रोडक्ट को चाहिए. So as a company employee, what you can do is that you can go on their library, you can fork it, you can customize it according to you on the basis of license. Okay, so license is also important before using that in any of your project. After reading the license that this code is usable, I can customize according to my project and I can use that. If I will feel that the customization I made is something great that can help others to do the same thing. Okay, so for the community work, because आपकी कंपनी बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को यूज कर रही है, तो टू मेक श्योर दैट कि आप भी कम्युनिटी को कुछ दे रहे हो. भाई कम्युनिटी तो ऐसे ही ग्रो होती है ना, बाय हेल्पिंग ईच अदर. टुडे many of you are involved to host this session. Why? Like, are you getting any money? Right? Are you getting something from this? You are hosting this because you are learning something, and you are making sure that whatever I'm learning today, I'm sharing with other guys in my college. I'm sharing with my peers today in my college. And that's how you learn. That's how we call learning in public, building in public, sharing in public. And that's a great way to come do in the college that you can start with. So yeah, that's most about open source and why you should care, how you should contribute. Like एक तो मैंने कंपनी का पर्सपेक्टिव बता दिया, राइट? आपका पर्सपेक्टिव लें, आप समो फॉर हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, लाइक सो व्हाई यू शुड कंट्रीब्यूट. वेल, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मैंने जितना कंट्रीब्यूट किया है उससे मुझे काफ़ी सीखने को मिला है, राइट? आई डिड पेड इंटर्नशिप, आई डिड अनपेड इंटर्नशिप टू, एंड लेट मी टेल यू दैट कि जो मैंने पेड इंटर्नशिप से नहीं सीखा है, मैंने वो ओपन सोर्स से सीखा था.
Well, it doesn't mean that you should also contribute. It's up to you. If you are interested in contributing in the open source, then contribute, otherwise don't. Because many people today coming in the FOMO that everyone is contributing to open source, that I also need to do. No, that's wrong, totally wrong. If you really want to enjoy what you're working, you need to answer that by yourselves, right? So what you can do by step, you can do first, learn what actually is open source, understand. And now understand your criteria. You're a student in the perspective to contribute in the open source is learning. So are you interested now? If you are interested, you should start contributing, otherwise don't. Okay, so it's not necessary to contribute. It's always a free work. So yeah, it's not necessary. You can make much more money in the freelance. You can make much more learning in other works too. But it's a perspective that I'm trying to give you, that it's not the thing that कि आपको करना ही करना है, बट आप करोगे तो इससे कम्युनिटी ही हेल्प होती है. दैट्स अ ग्रेट वे. सो आई होप ओपन सोर्स के बारे में हम क्लियर हैं. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask me right now, and before coming to the next topic, because अगर हमें open source ही समझ नहीं आएगा तो otherwise आगे के topics का sense नहीं बनेगा. So Participants can raise their hand or they can ask in the Q&A section. Prateek, yes please. Prateek, Hello? I guess you can open your mic. Sir, am I audible? Yeah, you are audible, Prateek. Sir, I want to ask that do we have to learn version control before starting and contributing in open source? Yes, you need to do. Okay, sir. We will be talking about it, what actually is version control and why you should learn and how you can learn that. So we will be talking about this. That's our next topic to do. Thanks for asking, Pratik, and that's a great way. That's a great question. I appreciate that. Okay, Let's thank you, sir. go. Vaibhav, great, excited for the session. Thank you, Vaibhav. Okay, let's come to the next topic. This is collaboration. I hope my screen is properly visible, right? Yes, it is visible. Yeah. You can anytime you can ping me if there is something wrong from my side, because there is a network issue in my area. Okay, let's come to the collaboration part. So yeah, open source is merely about the collaboration. Many people, like thousands of people contributing together in the open source, and how they can contribute. So there is a software called GitHub and Git. So don't confuse about the GitHub and the Git. In a simple way, try to understand in a way that Git is something like a drawer, right? आपके जो कंप्यूटर की डेस्क होती है उसमें आपके फाइल्स होती हैं, राइट? बहुत सारी फाइल्स होती हैं, एंड आप कई तरीकों की फाइल्स अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से बनाते हो, ठीक है? तो ड्रॉर जो है ना, आप इसलिए क्रिएट करते हो कि ड्रॉर में आप अपनी फाइल्स को सेट कर दो, एंड उन फाइल्स को ट्रैक करने के लिए, राइट? ऑल द फाइल्स आर एट अ सिंगल प्लेस, एंड उस फाइल में से कोई भी फाइल मिसिंग होती है या कोई भी फाइल नहीं ऐड होती है तो आपको पता चलता है, बिकॉज इट्स योर ड्रॉर, राइट? इट्स योर ड्रॉर, राइट? सो वर्जन कंट्रोल इज द सेम थिंग. वर्जन मीन्स आपके सॉफ्टवेयर का वर्जन, जो भी अपनी वर्जन होते हैं 1.0, 2.0, 0.10, तो जितने भी ये वर्जन्स होते हैं इनको कंट्रोल करना, ठीक है? तो जैसे वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, तो इन सारे वर्जन को प्रॉपरली कंट्रोल करना. नया अपडेट, आपने कोई अपडेट किया तो पिछला क्या अपडेट था और नया क्या अपडेट था, इसको ट्रैक करता है वो सॉफ्टवेयर, विच इज गेट. और समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि मान लो ये कोई बंदा है, ठीक है, एंड ये भी आपकी टीम है, आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज दैट कि इस बंदे ने कोई कोड लिखा जो कि क्रैश कर देता है वेबसाइट को, या सॉफ्टवेयर को क्रैश कर देता है, ठीक है? तो होगा क्या
ये सब भी वही चीज फील करेंगे। तो वर्जन कंट्रोल आपको एक पावर देता है कि आप ना पिछले वर्जन पे चले जाओ जिसमें क्रैश नहीं था, ठीक है, और सबके इश्यूज सॉल्व हो जाए। फिर जो नया आपने फीचर ऐड किया था जिसकी वजह से इशू आया था, उसको ओपन पे आपकी टीम मिलके देखेगी कहाँ इशू था, फिर आप नया वर्जन फिर निकालोगे। सो आई होप वर्जन कंट्रोल इज यू गेट द पॉइंट व्हाट एक्चुअली इज वर्जन कंट्रोल। तो एक होता है गिट, एक होता है गिटअप। तो गिट एंड गिटअप में क्या अंतर है? सो गिट माने वर्जन कंट्रोल आपके लोकल सिस्टम में, राइट, जो आपके लोकल सिस्टम में होगा, जिसको आप ट्रैक करोगे अपने लोकल के लिए, मतलब उससे किसी और को अदर को फर्क नहीं पड़ेगा। आप पीछे जाओ आगे जाओ किसी और को फर्क नहीं पड़ेगा। बट इट व्हेन इट कम्स टू गिटहब, गिटहब कुछ नहीं है, क्लाउड प्लेस है ये गिटहब। इस पे सब लोग अपना अपना कोड पुश करते हैं, यानी ये मेन कोड है। तो इसमें जैसे मान लो ये गियर बॉक्स है, ये आपने ऐड किया है, ये वाला गियर बॉक्स है ये आपने ऐड किया है। तो जब आप अपना लोकल चेंज करोगे तो वो बाकी तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। भाई आपने कोई कंपोनेंट बनाया, कोई बटन ऐड किया अपनी वेबसाइट में, वो बाकी एक्सेस कर पाएंगे क्या? नो। बाकी लोग कैसे एक्सेस करेंगे? जब आप अपना कोड ना क्लाउड पे डाल दो, तो उसको कहते हैं अपन गिटहब। एक क्लाउड है एक तरीके से, जहां पर वो कोड जब एक बार आप डाल देते हो तो बाकी सब लोग भी उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और जब बाकी सब लोग एक्सेस कर सकते हैं तो उसको डाउनलोड करेंगे, उसको चलाएंगे, उसको एनहेंस करेंगे। तो दैट इज गिटहब। और गिट क्या है? जो वर्जन कंट्रोल आपके लोकल सिस्टम में होता है। आई होप यू गेट द आइडिया, because this is something you are going to use daily, approximately daily, like even in any, if you are working in any of the company, or if you are working on the open source anywhere, you will be using that daily, right? So let me know if you didn't get about it. If you have any question, I'm reading the chat, but I hope that it clears the thing. So open source is mainly about collaboration. Like if I share something, this is the Mishi repo in which I am contributing past year. You can see that there are 564 people, like 564 people contributors in this repo, and सबने अपना contribution किया है, तब जाके ये पूरा का प्रोजेक्ट एक तैयार हुआ है। तो ये GitHub है। So this is how it looks. This is the UI of the GitHub. And Git जो होता है वो आपकी लोकल सिस्टम में होता है, which you can easily learn on any of the YouTube video. You go to the YouTube video, search what is Git and GitHub and how to use that. कुछ कमांड्स आएंगे and you can learn that. It's a basic, like जैसे बेस्ट कमांड्स होती हैं आपकी, जो लिनक्स कमांड्स होती हैं, ऐसे ही हैं कुछ कमांड्स होंगी जो आपको हेल्प करेंगी आपके प्रोजेक्ट के लिए। सो व्हेन यू विल मेक अ नेक्स्ट प्रोजेक्ट, राइट, use the version control and you will say to me that why I was not using that. Like that's a great thing. Like मैंने कुछ एरर क्रिएट किया, मुझे दोबारा से जाके देखने की जरूरत नहीं है मैंने कहाँ मैसअप कर दिया। लाइक मैंने कोलन नहीं लगाया, मैंने लाइन पॉइंटर चेक नहीं किया। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। यू कैन से दैट हे लेट्स जंप टू द बैक टू द वर्जन इन विच देयर वाज नो एरर, एंड फिर जो एरर आया उसको देखते हैं। लेकिन पहले उस वर्जन में आ जाओ जिसमें कोई एरर नहीं था, एटलीस्ट वेबसाइट तो रन हो। So that's a great thing to really learn. So go and you can learn at any of the YouTube video. That's the basic thing. So for the GitHub, this is the UI how it looks. So Mishri means the name of the project. इस प्रोजेक्ट में इतनी सारी फाइलें आप सबको यहाँ देखेंगे, किस टाइप की लैंग्वेजेस यूज़ की गई हैं, जावास्क्रिप्ट, गो, CSS एंड जो भी इसमें यूज़ किया गया है। एंड यू कैन ऑल्सो गो एंड सी दैट, यू कैन ऑल्सो गो इन द इशू सेक्शन। इशू सेक्शन में क्या होता है? All the issues in this particular product or in this particular project are mentioned over here. Okay, तो आप भी जाओ, मान लो वेबसाइट पे अगर आप जाते जो लाइक जो मैं जिसकी रेपो मैंने अभी खोली है वो ये है इस वक्त, राइट। सो यू कैन से दैट हे that's a great project, but you know what, I don't like how this I button looks. We can improve that. We can improve many in a great way. Then what should I do? Well, this project is open source. Okay, great. I can click on this and I can go to the issues section. Okay, click on the new issue
Okay, new issue. And which type of issue you want to create, like documentation, continuous development, journal work. Okay, I want to report a feature because मैं feature की बात कर रहा था. तो okay, मैं अब लिख दूंगा कि hey, want to enhance the info button. बस. And that's how you create an issue. And now you can say that either I would like to work on that, मैं enhance कर सकता हूँ, or either someone else can do. So many of the issues I created over here, and you can see like you can pick up any issue. अगर यहाँ पर कोई assign नहीं है means it is already assigned. If कोई assign ही नहीं है, I created one issue 2-3 days back, and this one is that. What actually I found is that I was running this project locally. मैंने देखा कि कंसोल्स में बहुत सारे एरर्स आ रहे थे. I just created the issue कि presently there are so many warnings that I would like to present, and I think there are few people that commented कि they would like to help, and someone also shared that hey, I research on that particular part, and they asked for that, and what I will do is that I will assign that so they can work on that and they can create a PR. What is PR? PR is a pull request. Means आपने जो भी इशू यहाँ आपने सॉल्व कर लिया इसको अपनी लोकल सिस्टम में, आप एक PR यानी पुल रिक्वेस्ट रेज करोगे अपने लोकल सिस्टम से. अगेन डोंट वरी अबाउट दैट कि ये सब कैसे होता है. इट्स अ बेसिक थिंग, यू विल लर्न इजीली. यू जस्ट नीड टू डू द यूट्यूब सर्च ऑन द यूट्यूब एंड यू कैन इजीली लर्न दैट. सो आप एक PR रिक्वेस्ट रेज करोगे एंड यू कैन सी दैट देयर आर सो मेनी पीपल्स आई रिक्वेस्टेड द PR, एंड ये वाली मेरी PR जिसपे मैं 4 दिन पहले काम कर रहा था. माइग्रेट रजिस्ट्री पेज टू RTK. तो इसमें जो हरे वाले यानी मैंने इतनी लाइंस ऑफ कोड ऐड किया है, राइट मीन्स इतनी लाइंस ऑफ कोड मैंने हटाया है. फाइल चेंजेस आपको देखने हैं तो आप देख सकते हो. मैंने कमेंट किया, लोग रिव्यू भी करते हैं. मैंने रिव्यू के लिए लोगों से मांगा है कि मेरे कोड को रिव्यू करो, कोई गलतियाँ हो तो बताओ, मैं उसको सुधारूंगा. दैट काइंड ऑफ थिंग. इवन इफ यू आर सीनियर डेवलपर, इट डजंट मैटर, ऑलवेज आस्क फॉर द रिव्यू. बिकॉज जब 4 लोग आपके कोड को रिव्यू करते हैं, लाइक इवन यू गाइस, लाइक मैं इसमें आर्टिको का यूज़ कर रहा हूँ, आर्टिके का यूज़ कर रहा हूँ, रेडक्स आर्टिके का. एंड इफ़ यू थिंक यू हैव गुड एक्सपीरियंस इन आर्टिके इन यूजिंग दैट, so you can go that and you can say that hey, you are using RTK but I think this is the wrong thing you are doing. So you can select that, you guys can, and you can say that hey Yash, that's great that you did in that way, but I think there is also a great way we can improve that, and we will really appreciate your input, right? So this is how you can contribute. Like contribute करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कोड में कुछ बड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ बड़ा तगड़ा फोड़ना पड़ेगा, राइट? मैंने जब कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था इन जनवरी, सो इन जनवरी एक mishri.io वेबसाइट है. आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग, आई जस्ट थॉट कि मुझे ओपन सोर्स करना चाहिए. आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग दी वेबसाइट. आई जस्ट फाउंड कि इस वेबसाइट में CSS इशूड, सो आई रेज्ड द इशू. Then the person and the founder of this company pinged me in the GitHub issue that hey yes, that's great, thank you for raising that, would you like to work on that? So I said yes, I would like to work on that. लो आपके सामने मैंने एक इशू दे दिया. मैं अब इसके लिए एक नया इशू क्रिएट करूंगा. आप में से जिसको इंटरेस्ट हो, यू कैन I will share the issue link with you guys and you can contribute. So this is how I found, like पिछली बार भी मैं ऐसे ही कुछ कर रहा था जनवरी में पिछले साल. So what I did is that I found that कि सबसे नीचे वेबसाइट में ये बटन है, इसमें ये सब्सक्राइब लिखा है, राइट? इस सब्सक्राइब में ना ये सब्सक्राइब थोड़ा सा नीचे था यहाँ को, CSS इशू, दैट्स अ CSS इशू. बट मैंने इसको सॉल्व करूँगा. सो आई आस्क्ड, एंड यू नो व्हाट, मुझे इस वेबसाइट को अपने लोकल सिस्टम में चलाने में 4 दिन लग गए, सॉल्व तो छोड़ो, राइट? तो हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज़ हाउ टू रन इट एंड व्हाट यू शुड डू, राइट? सो विच इज़ द पार्ट दिस, इसके बारे में बात करते हैं. तो द थिंग इज़ दैट कि इफ़ यू रियली वांट टू स्टार्ट ओपन सोर्स टू लर्न थिंग्स, don't care about
making a big impact, that I will do that and I can make a big impact and I can change everything. Don't worry about that. What you just need to do, just go on the GitHub, search for the projects. आज अगर आप free हो, you can go on the GitHub, search for the projects. Laptop को बंद करो, सो जाओ. Don't do anything more than that, right? Don't worry about contributing. Don't worry about creating issues. Don't worry about picking up the issues. Just explore the GitHub. Just explore the GitHub. नेक्स्ट डे आप किसी भी प्रोजेक्ट को लाइक जैसे ये जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा था मिश्री, ये है मिश्री प्रोजेक्ट. यू कैन क्लिक ऑन दैट मिश्री प्रोजेक्ट एंड व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन क्लिक ऑन द फोक. व्हाट एक्चुअली फोक मीन्स? फोक मीन्स कि आपने इस पूरे प्रोजेक्ट को ना अपने गिटहब पे कॉपी कर लिया है. ठीक है, जैसे हमारी गूगल ड्राइव होती है तो किसी और ड्राइव का एक्सेस आपको होता है, बट यू वुड नॉट, आप उसको ना उनका जो ड्राइव एक्सेस है उसको तो आप मैसअप नहीं कर सकते ना. लाइक अगर आपने कोई एरर कर दिया एकदम से, आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में थोड़ी मैसअप करोगे. सो व्हाट यू कैन डू इज दैट फोक दैट. फोक मीन्स आपने क्लोन कर लिया उसको एंड उसमें अपने आप जो आपको लफड़ा वकड़ा करना है, जो यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू, एरर्स एंड एनीथिंग, राइट? सो first step, explore. Second step, go and clone any project. Just clone it, fork it, click on the fork and ये आपके GitHub अकाउंट पे दिखाने लगेगा कि आपका जो है आप इसको फोक कर सकते हो. आप इसको क्रिएट कर दो फोक को. तो मैं दिखा देता हूँ फोक कैसे दिखता है. तो आपका एक बार फोक हो जाए तो आप उसमें कुछ भी करो, इट डजंट मैटर. फोक कर लिया, सेकेंड स्टेप भी होता है. थर्ड इज द स्टेप वेयर यू रन द प्रोजेक्ट. How can I run the project? Okay, that's a good question to ask. So इसमें से एक प्रोजेक्ट मैंने क्लोन किया था, राइट? तो लेट मी ओपन द प्रोजेक्ट. ओके, ये रहा मिश्री. तो इसमें लिख के आ रहा है जैसे फोक. तो ये मेरी फोक रैप हो, लाइक ये मेरा अकाउंट है, ये मेरी फोक रैप हो. तो इसमें मैं कुछ भी मैसअप करूँगा, इट विल नॉट ब्रेक द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जो मैं अभी आपको दिखा रहा था. तो ये सिमिलर ही दिखेगा जो फोक था ना, उससे सिमिलर ही दिखेगा, लाइक यू कैन सी दैट. बट इसमें फ़र्क इतना है, यहाँ पर लिखा आएगा कि ये फोक मैंने कहाँ से किया. तो ये मेरा अकाउंट है यश शर्मा, उसके अंदर मिश्री है. यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये मैंने मिश्री से फोक किया है, राइट? तो इसमें मैं कुछ भी चेंजेस करना चाहूँ कर सकता हूँ. इट विल लुक सिमिलर. ग्रेट. नाउ अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ. तो रन करने के लिए आप जाओ contributing.md फाइल में. Go to the contributing link. Every project contains this file, right? So now the third step is open contributing.md file. We migrated our doc to this website, and you can click that. How you can run, if you are a front-end developer, how you can run this project in your local environment, like step by step. Like इसमें काफी सारे हैं, इसमें से मैं pick करूँगा, right? I want to contribute in the UI. If you want to contribute in the docs, if you want to contribute in the command line, if you want to contribute in the continuous integration, if you want to contribute in the backend Mishri server over here. But मुझे ना UI में करना है, तो I will click on contributing to UI. Okay, great. Okay, so this project use Next.js, this project use React, this project use Material UI, this project use, what the fuck is Billboard? Okay, leave it. What is Cytoscape? मुझे नहीं, leave it. मुझे Next.js आती है बस. Oh, great. Okay, so how can I set up the project? Well, setup. Okay, Windows user. Well, I'm not the Windows user, so leave it. Run Mishri server UI development. So इसमें यहाँ पर उन्होंने दिया है कि in UI dependencies, copy this, run this, 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 and ये तो टेस्ट है, so leave it. आपका इसमें लिखा है इन्होंने कि इस लोकल होस्ट पे आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा, and enjoy. Like after that, you have done a lot of work for yourself. Just enjoy what you have done. You have run a successfully up server of an open source project, and that's a really, really great thing you should enjoy about yourself. So go again today, take a sleep. So why I'm
trying to say is that because this is a process which needs steps, which needs a lot of time to get yourself comfort with other projects, what they are doing and what is the architecture of that, to enjoy what you have done, even if it's a backend server, even if it's a UI server. So I hope you get my point. Enjoy every step. That's what actually matters, at least for me. Okay, so I hope you understand how you can clone that. Okay, मैंने मैंने एक फोक कर लिया, मैंने कंट्रीब्यूट के लिए, मैंने उसको रन करने के लिए मैंने कंट्रीब्यूशन गाइड पढ़ ली. ओके, मैंने रन भी कर लिया. अब क्या करो, अब आप उसको मैसअप करो. राइट, आपको जो भी आता है, आपको जावास्क्रिप्ट आती है, आपको HTML आता है, आपको जो आता है ना, अपनी ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्किल उसको मैसअप करो, उस प्रोजेक्ट को पूरा मैसअप करो. एंड मैसअप करने के बाद उसको देखो आपने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया उससे क्या हुआ. लाइक आप यू डिलीटेड सम कोड, क्या एरर आ रहा है, डू समथिंग. एंड आफ्टर दैट इट्स टाइम फॉर यू टू गो ऑन द प्रोजेक्ट विच इज दिस, जो भी आपने फोक किया हो उसमें इशू में जाना. Well, we recently hit the mark of 4.k. I will share with you guys. तो आप इसमें जाना, इशूज सेक्शन में जाना, यहाँ पर ना लेवल सेलेक्ट करना, लेवल में सेलेक्ट करना गुड फर्स्ट इशूज. तो गुड फर्स्ट इशूज आर द इशूज जो कि गुड फॉर न्यू कमर्स. ठीक है, सो आई एम द न्यू कमर, आई विल क्लिक ऑन दैट. एंड अब जो भी इश्यूज आएंगे वो गुड फर्स्ट इश्यूज हैं जो बेसिक है, जिससे आप स्टार्ट कर सकते. लाइक ग्रामर एडजस्टमेंट, लाइक आई कैन एक्सपेक्ट, लाइक I think 112 are people in this session, which is great, which is really great number. You can click on this link and you can say that I would like to work on that. Why? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें एक सिंपल सा ग्रामर इनहेंसमेंट है, मे बी एस हटाने से you will make your first successful open source contribution to a great repo. Like ये CNCF project है, मिश्री is a CNCF project and काफ़ी अच्छा project है जो कि 4.6 है. 4.6 के स्टार से वैल्यूबल प्रोजेक्ट है काफ़ी. एंड आपको काफ़ी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी एंड उसमें आपने अपना पहला कंट्रीब्यूशन किया. सो दैट वुड बी ग्रेट टू एंजॉय एंड टू सेलिब्रेट. ओके, अब तक आपने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है. ठीक है, अब आप रिलैक्स करें फिर से, एंजॉय व्हाट यू हैव डन. नाउ अब आप क्या करेंगे? नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गेट योर हैंड डर्टी. मीन्स आप अपना कॉम्प्लेक्स कोड में हाथ डालो, लर्न करो, गलतियाँ करो. कैसे करोगे? ओके, सो एवरी प्रोजेक्ट, फर्स्ट इन चीज़ों का ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ, देन अपन इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं, लास्ट करेंगे, बिकॉज दिस इज मेनली अबाउट द ओपन सोर्स. एंड लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन के लिए तैयार रहूँगा. तो व्हाट एक्चुअली एट लास्ट वी विल बी डूइंग, आपने ये सब कर लिया, देन उसके बाद आप क्या करोगे? आप सबसे पहले एक ध्यान रखोगे कि जो भी आप प्रोजेक्ट को यूज कर रहे हो, वॉट एवर प्रोजेक्ट यू आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट ऑन, मेक श्योर दैट कि उसका लास्ट मर्ज कब था. ठीक है, उसकी जो PR थी उसका लास्ट मर्ज. बिकॉज क्या, अगर मान लो किसी पुल रिक्वेस्ट को, PR मीन्स पुल रिक्वेस्ट, अगर किसी पुल रिक्वेस्ट को 6 महीने या मीन्स 2 साल 3 साल पहले मर्ज किया, तो अब आपकी जो पुल रिक्वेस्ट नहीं आएगी, नई जो क्रिएट करोगे आप, उसको कोई व्यू ही नहीं करेगा, क्योंकि 3 साल से प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं किया किसी ने. तो आपका मेहनत, आपका इनपुट सब वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि जो भी मर्ज होती है ना, वो यहाँ दिखता है, लास्ट मर्ज था 12 घंटे पहले, 12 hours ago. दैट मीन्स इट्स अ प्रोजेक्ट विच इज एक्टिवली मर्जिंग द PRs. यानी आप जो भी पुल रिक्वेस्ट रेज करोगे उसको एज फास्ट एज सून रिव्यू मिलेगा और एज फास्ट एज सून मर्ज भी होगी, और आपका जो कोड है ना प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाएगा, विच इज यू शुड लुक. ऐसे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करना है जो 3 साल से उस पर काम ही नहीं हो रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. सेकेंड थिंग, अगर हम बिगिनर हैं तो हम ऐसा प्रोजेक्ट यूज करना चाहेंगे जिसमें ना स्टार्स कम हो. इस चीज का ध्यान रखना. क्यों हम ज़्यादा स्टार्स वाले में क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करें? बिकॉज द रीज़न इज दैट अगर ज़्यादा स्टार्स मीन्स वो ज़्यादा पॉपुलर है.
एंड इफ प्रोजेक्ट इज पॉपुलर इनफ तो वहाँ पर काफ़ी ग्रेट इंजीनियर्स भी आए होंगे कंट्रीब्यूट करने के लिए. लाइक इस अकेली रेपो में इंजीनियर्स इंटेल, रेड हैट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी लोग कंट्रीब्यूट कर चुके हैं. जब ऐसे लोग आपके प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करते हैं, वेल इसमें काफ़ी ओपन फर्स्ट ऑफ गुड फर्स्ट इशूज है फॉर यू टू स्टार्ट. लाइक मैंने ग्रामर वाला बताया था, लाइक इट्स अ बेसिक एस हटाना था उसमें बस. बट क्या होता है कि जब आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो वो लोग जो कोड लिखते हैं ना इतना हाई क्वालिटी का होता है कि उसमें छोटे मोटे एरर आते ही नहीं. You will not find any small issues to work on, and as a beginner you will find it difficult for yourself to work on, right? तो ऐसा प्रोजेक्ट लो जो कम स्टार्स का हो. आई विल सजेस्ट 5000 से नीचे जितने भी स्टार्स के प्रोजेक्ट हैं ऑल आर गुड फॉर यू टू स्टार्ट विथ. ठीक है, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं 5000 से नीचे उनको यूज़ करो एंड उनको मेज़र करो एंड दे आर मच बेटर. लाइक उसमें आपको काफ़ी सारे गुड फर्स्ट इशूज़ मिल जाएंगे जो अनअसाइंड हैं, जो किसी और को असाइन नहीं है, जिसमें आप काम कर सकते हो. तो मेक श्योर अबाउट दैट. तो 2 थीम हो गई. ठीक है, लास्ट मर्ज कब हुआ था, दूसरा उसमें कितने स्टार्स हैं. लास्ट चीज़ है वो है पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करना. पुल रिक्वेस्ट के बाद इसमें एक ऑप्शन आता है क्लोज. ठीक है, क्लोज पे क्लिक करना. ठीक है, जो रेड वाला होगा ना इसको देखना, इसमें ये देखना किस तरीके का फीडबैक मिला है. ठीक है, समटाइम्स पता क्या होता है कि कुछ समटाइम्स सम प्रोजेक्ट्स डोंट गिव गुड रिव्यू. लाइक वो आपको कुछ अच्छा रिव्यू नहीं देंगे एंड आपके एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करेंगे. तो आप क्लोज वाले पे जाओ, यानी ये मर्ज नहीं हुई, ये क्लोज कर दिया. इसमें रिव्यू देखो, ये तो इस जिसने रेज करी उसने खुद ने क्लोज कर दी. बट जाओ देखो कि जो भी जिसने भी इस पीआर को रिव्यू किया है उसने कैसे इसको वो किया रिव्यू, क्योंकि एनवायरनमेंट मैटर करता है. देखो जैसे ली है, ये क्लोज कर दी गई पीआर, लेकिन इसने क्या कहा है, थैंक्स अमित, विल यू ऑल्सो फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन टू साइन योर कमेंट्स. सो दैट मीन्स इट्स अ हेल्दी कम्युनिटी. आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपको थैंकफुल कर रही है. इवन इफ आपको भले ही HTML आती है, आई कैन गारंटी दैट दिस पर्सन विल कमेंट. ओके, सो दे आर हियर फॉर यू टू हेल्प. तो अगर आपके जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो उसकी क्लोज पीआर में इस तरीके के रिव्यू हैं, देन आपके सारे साइंस क्लियर है. मीन्स कम स्टार्स हो, गुड फर्स्ट इशूज हो और क्लोज पीआर में अच्छे रिव्यूज हो, यानी इट्स अ गुड प्रोजेक्ट फॉर कंट्रीब्यूट. ठीक है, अब आप उसमें जाओ, एक्सप्लोर करो, कोई भी इशू पकड़ो, उसमें कहो कि मुझे उस पर काम करना है. स्पैम मत करो हर इशू में, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है. राइट, तो इससे मेंटेनर्स जो होते हैं, जो उस पूरे प्रोजेक्ट को मेंटेन करते हैं, दे कैन सी दैट यू आर ट्राइंग टू स्पैम and they will not assign you. So just ask for few of the issues you would like to work on, and अगर आपको कोई इशू असाइन हो गया है तो always gives the report कि मैंने ली मैंने ग्रामर फिक्स कर दी, this is the PR I raised, I would like to work on something next, how can I do that? Ask questions. Okay, I hope you understand most of it. And एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, whenever you go on any of the open source project, just star it, give it a star, because यहाँ पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रेड हैट, इंटेल जैसे पीपल अच्छे पैकेज पे हैं, दे आर डूइंग देयर वेल, बट स्टिल दे आर कंट्रीब्यूटिंग हियर टू मेक दिस प्रोजेक्ट बेटर. और जो यहाँ पर अदर मेंटेनर्स हैं, राइट, जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, उनको खुशी मिलती है जब आप उनके प्रोजेक्ट को स्टार करते हो. राइट, उनको एक अप्रिशिएशन मिलता है कि उनकी मेहनत को एक अप्रिशिएट किया जा रहा है अदर डेवलपर्स. So whenever you go to any of the project, go just star it, and it's a kind of community work, it's a kind of contribution. And हर स्टार जो होता है ना, इसका एक नोटिफिकेशन मेंटेनर्स को जाता है कि आपने उसको स्टार किया है. दैट्स दे ऑलवेज अप्रिशिएट. लाइक मैंने अभी स्लैक ओपन नहीं किया है, बट मैं स्लैक ओपन करके दिखा सकता हूँ. जब भी कुछ नए स्टार्स आते हैं, some of maintainers mention that hey, we got new stars, they enjoy that. So go and start it. I will share the link with you guys. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब मैं स्लैक चैनल में जाऊँगा और मैं उनको बताऊँगा कि मैं BPIT कॉलेज से आ रहा हूँ एंड दे आर ग्रेट and excited students,
they really want to contribute in the open source. They really want to understand what actually is Mishri is. They really want to understand what actually is Layer 5 is, how they can contribute and how they can improve themselves and how they can improve the project and how they can become the part of projects like programs like LFX, GSOC, GSOT. Because हम काफी सारी openings करने वाले हैं इस term में GSOC के लिए भी LFX के लिए भी. I really welcome you to join our community to contribute. And let me tell you guys, we will not ask for any of the DSA questions. We will not ask for any of the interview questions. You will get selected on the basis of your work. Come, contribute. You are not late. Come and contribute. And I can guarantee that if you are looking for a long-term relation, like मैं review करता हूँ जब interns की बारी आती है, जब interns hire होते हैं LFX के लिए या GSOC के लिए, तो मैं जब review करता हूँ तो जब मुझसे पूछा जाता है तो मैं एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि जो भी contribute करना चाह रहा है वो किसके लिए कर रहा है, like LFX के लिए. अगर वो कर रहा है तो LFX के बाद चला जाएगा, राइट? बट हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, अपनी मेहनत उसको समझाने में इन्वेस्ट करते हैं जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म है, लाइक दे विल स्टे लॉन्ग. बिकॉज हमने मान लो आपको बैठ के 6 घंटे को समझाया, लाइक एक महीने में हम आपके साथ टाइम इन्वेस्ट करते हैं 6 घंटे 12 घंटे में हमने आपको समझाया, तो वी विल एक्सपेक्ट कि आप लॉन्ग टर्म रहोगे, क्योंकि हम ऐसे हर 3 महीने में चाहे 12 घंटे किसी को नहीं दे सकते हैं, राइट? सो वी ऑलवेज लुक फॉर द पर्सन who are here for the long term. If you are here for the long term, show that. Show to the maintainer that you are here for the long term. You are getting big vision. You are here to become a maintainer, not for LFX GSOC. Good, you are here for LFX GSOC, but think big. GSOC is the good thing, but you can be much more better than GSOC. You can be much more better than LFX. How? By becoming a maintainer, becoming a mentor, right? So think in that way and your whole perspective of contributing will change. आप इश्यूज तो खुद को असाइन करते हो, आप PR तो रेस करोगे, दूसरों की भी रिव्यू करो. गो एंड रिव्यू दैट. इट्स अ कंट्रीब्यूशन. गेटअप भी इसमें काउंट होता है. लाइक आपका जो डब्बा होता है ना वो ग्रीन हो जाएगा अगर आप किसी की PR रिव्यू करोगे, तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन होता है. सो गो एंड डू दैट. एंड आई विल गिव यू 1 minute till I am plugging my charger because my laptop is discharged. So just give me a minute. I hope you are enjoying the session and I hope you are getting some insights today. Did I share the link of the Mishri? I guess no. Right? Yes, sure. You can put it in the Q&A section. Okay. Just go and spam that. Like स्टार को जाके स्पैम कर दो एंड जब मैं Slack में जाऊँ लोगों को मैसेज करूँ कि मैं BPIT कॉलेज में सेशन करके आ रहा हूँ, they should know कि BPIT students spam whole star thing, right? So I shared the link with you guys in the comment section. Go and start it and let me tell you to the maintainers that hey, I'm coming from BPIT college. Okay, let's come to the final topic. Okay, I will give you a time, 2 minutes to start the rhythm. If you like, go and start it because I really want to see the faces of maintainers कि इतने सारे एकदम से कैसे आ गए. So that's why. Go. मैं इसको डबल बात नहीं कर सकता क्या? ओके, लेट मी शो यू वन मोर थिंग. अगर इफ मैं स्क्रॉल करूँगा लास्ट में जाऊँ तो इसमें कैन यू सी द ग्राफ. इस ग्राफ को देखो, लाइक दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 2019 एंड दिस इज द स्टार ग्राफ. तो आप इसमें जो रेड लाइन देख रहे हो ना किस तरीके से, लाइक 2019 से लेके 2020 तक तो हमें केवल 100 स्टार्स मिले. 21 में बढ़ गए, 22 में लाइक ग्रेट, 23 में ग्रेट, और एंड 23 से 24 का जो ग्राफ है ना वो वर्टिकल चला गया कुछ ऐसा. सो दिस लाइक हम जब भी मीटिंग करते हैं ना वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट एंड हमारी मीटिंग इससे स्टार्ट होती है कि लाइक टुडे लाइक देखो कितना ग्राफ कैसे जा रहा है एंड
people liking our software, people like using the software, and they are starting it. And so that's why I'm saying, that's why I'm encouraging you, and that's why. Okay, so अभी तक हमने देखा कि आप किसी और प्रोजेक्ट में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो. अब मैं कुछ चीज़ें छोटी मोटी बता देता हूँ. फर्स्ट, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करो, दे हैव अ कम्युनिटी. Most of the projects have their community. So what you can do is that you can just go to their readme. This is the readme. Readme means overview of the project, what they have written. And what you can do is that you can click how to join the community. So you can click on Discord, right? You can click on Slack channel, and inside Slack channel, introduce yourself. Say, hey, I'm Yash, and I'm good with web development, and I'm here to contribute. I'm looking for issues to get assigned. Let me know if I can help you with something, and I'm really excited to contribute. I'm really excited to get an internship also in LFX. How can I contribute that? How can I make sure that I'm getting selected for that? That's a great question to ask. In Mishri, every week we organize the meetings in which we discuss about this project, which is open for everyone. Like you, any of you can join and learn about the project. You can contribute, like how all the maintainers, how all the engineers talks about Mishri, how they can enhance the backend, how they can enhance Postgres SQL, how they can enhance the UI. These kind of meetings you should join, because even if you are not contributing, it doesn't matter. Joining meeting it actually matters, because if you will join the meeting, right, you get exposure to a broader perspective. The people they are contributing, the people that they are working. You can ask a question directly to a maintainer. And let me tell you what, if whenever you ask a question, आप गलती करोगे, आप बुद्धू सा क्वेश्चन पूछोगे, I can guarantee that. But you know what, nobody, like even maintainers, जो भी जिससे भी आप पूछोगे ना, they know कि आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे वो कोई खास नहीं हो. If you are a great engineer, you have a industry experience of 20 years or something, but it just वो अपने माइंड से निकाल दो, ask a question, and you know what, they will make sure you get answered whatever question you ask. एंड अगर हम उस चीज़ का एडवांटेज नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा. लाइक इवन व्हेन आई स्टार्टेड इन द जनवरी, आई वाज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश दैट मच विद कॉन्फिडेंस, राइट. लाइक आई नो द इंग्लिश, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई कैन स्पीक दैट, बट व्हेनेवर इट कम्स टू टॉकिंग टू द foreigners, whenever it comes to talking with someone who is from America, someone who is from Spain, we always lose the confidence of speaking English. And you know what, I learned English by speaking in the meetings. Like I'm joining meetings since a year, a whole damn year, right? And in whole damn year, I learned a lot of things, like a great words to speak on, and how you can speak, how you can present whatever you are working on to the people who is other countries, right? This is a great skill you should learn about, how you are presenting your work to the other people. I hope you get the idea. So go join the meetings. मिश्री में काफ़ी सारी meetings होती है, every week meetings होती हैं. Slack को join करो, mishri.io में जाओ, ठीक है, right? mishri.io. If you are interested in the Mishri, अगर आप नहीं हो तो don't worry, but if you are interested in contributing in the Mishri, उसमें community and calendar पे जाओ. कैलेंडर में आपको हर मीटिंग, लाइक अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, डेवऑप्स इंजीनियर हो, सबके लिए अपना अपना एक पाथ है. तो अगर आप इसमें थोड़ा सा देखोगे तो ये कोई मीटिंग्स की सारी लिंक है. तो कल जैसे मंडे है, कल वेबसाइट मीटिंग है, तो कल वेबसाइट मीटिंग अराउंड 7:30 PM के आसपास होगी. इन दैट मीटिंग यू कैन लर्न अबाउट वेबसाइट एंड एवरीथिंग. वेडनेसडे को मिश्री के बारे में होती है, तो इसमें बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ होता है. थर्सडे को लेयर 5 की न्यू कमर्स मीटिंग होती है, जो कि बेसिक होती है, बिल्कुल बेसिक, जिसमें आप लोगों को ही मेनली बुलाया जाता है कि आप लोग लर्न कर सकते हो. आप लोग चाहे जैसे क्वेश्चन मेंटेनेंस इंटर्न्स जो लेयर 5 में रह चुके हैं उनसे आप बात करते हो. न्यू कमर्स मीटिंग होती है, CNCF टैग मीटिंग होती है. हाँ, लेयर 5 का जो फाउंडर है, जो जिसका एक प्रोजेक्ट है मिश्री के बारे में भी हम समझेंगे उस मीटिंग में. तो उसमें जो फाउंडर है वो इस मीटिंग को होस्ट करता है, जिसके अंदर अदर फाउंडर्स आते हैं. वो भी पब्लिक है, लाइक यू कैन ज्वाइन द फाउंडर्स मीटिंग, राइट, विच इज that's a great thing to really join. Why you are not joining? We should join that, right? अगर आप फाउंडर्स की मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो, you will learn a lot. तो CNCF टैग नेटवर्क मीटिंग है,
And Mishri build and release meeting, which is a meeting in which we talk about the DevOps thing that we are doing in the level. And make sure if you're joining the meeting, open your camera. It doesn't matter how messy you are, it doesn't matter. Just open your camera, build a connection with the maintainer, and I can guarantee you, if you have built a connection and आप भले ही उतनी skills में अच्छे नहीं हो, but you have built the connection with the maintainer, you will get the internship, not the other person, because they are looking for the team person who can work together. उन्हें great engineer से मतलब नहीं जैसे वो बात ही नहीं कर पा रहे, right? They need a people they can talk to. So open your camera, open your mic, ask a question. So we learned today a lot of things. I hope you digest all of this, and I hope you start the report. Kidding. Let's move to the last part of my talk, and we will end this session. We are already 3 minutes over to the today's session. Yeah. We already talk about कि Layer 5 क्या है. Layer 5 is a company which is open source first company, जिसमें काफ़ी सारे projects हैं like Mishri, Service Mesh Performance, and SMI and Nighthawk. These are great projects that we created with different languages. And ये सारे के सारे open source हैं, and इसमें जो maintainers हैं वो में कुछ Reddits हैं, कुछ Intels हैं. So if you are interested in that particular area, why you are not sharing? Yeah. Mishri Playground. So what is Mishri Playground? So we are actually building a product called MeshMap, and for just an overview, what actually you can understand, you can see the canvas, right? So for a small overview, MeshMap is something kind of जैसे आप फ्रंट एंड बनाते हो, आप बैक एंड बनाते हो, फ्रंट एंड बैक एंड को कोडिंग से कनेक्ट करते हो, उसको होस्ट करते हो, आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट करते हो, राइट? मैश मैप आपको एक कैनवस प्रोवाइड कराता है जिसमें आप अपने बैक एंड को उठा के डाल सकते हो, आप अपने फ्रंट एंड को उठा के डाल सकते हो, और उन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो. एंड दैट्स ऑल यू नीड टू डू. योर बैक एंड एंड फ्रंट एंड इज कनेक्टेड, एंड यू जस्ट नीड टू डिप्लॉय. यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द डिप्लॉय, और आपका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिप्लॉय हो जाएगा. As simple as that. That's pretty cool. Like ऐसे प्रोजेक्ट पे आप जब काम करोगे, that's you will get excited. Okay, it's time for the surprise. It's time for the surprise. I hope you are not get bored, and let me know if you are bored, because if I'm making you bored, I need to improve myself, and it's really, really important. So are you excited for the surprise? Let me know in the chat. Excited for the surprise? Participants can use the react option. Okay, I see some of you really, really excited. Let's see. So I have came with some issues for you to work on. Like खाली आप नहीं आया हूँ, आप कुछ देके जाऊँगा जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हो. झूठे वादे करने नहीं आया हूँ. को फाइंड द इशूज़. मैं आप लोगों के साथ ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, बिकॉज आई एम ओवर टाइम में सारे इशूज़ को एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, बट दे आर गुड फर्स्ट इशूज़ फॉर यू टू वर्क ऑन. You can click on these of the issues to work on and understand what actually that issue means. And सारे issues काफ़ी basic हैं, right? And let me know ये जैसे वाला issue close हो गया, don't worry about that. Just go on the issue section. इस issue section पे click करना. मैंने आपको शुरू में बता दिया था good first issues. And फिर भी कुछ नहीं मिले, हार मत मानना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे पिछले साल में लोग आते हुए देखे हैं, बहुत सारी कमिटमेंट उन्होंने कही कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कोई कुछ नहीं कर पाता. What actually you need to do, चाहे 2 दिन लग जाए, चाहे 3 दिन लग जाए, मैं प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करके रहूँगा. चाहे वो प्रोजेक्ट समझ में नहीं आए, क्वेश्चंस पूछो, डजंट मैटर. बेवकूफ़ लगने दो. मैं गारंटी दे सकता हूँ जब आप अपने आप को 1 साल में मुड़ के देखोगे ना, तो आप अपने आप को मच 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 बेटर फील करोगे, क्योंकि आपने वो डम क्वेश्चंस पूछे. आस्क एनीवन हु इज कंट्रीब्यूटिंग टू द ओपन सोर्स एंड लेट मी नो कि अगर उसने पहली बार में कोई तगड़ा क्वेश्चन पूछा हो तो. सो गो एंड आस्क डम क्वेश्चंस. Right, go to the Slack channel, go and say that, hey, I would like to work on that.
hey, I'm getting this problem. Hey, I'm not able to solve the issue. Hey, how can I solve this issue? Hey, this and hey, this. प्राइवेट मैसेज नहीं करना है किसी को, ऑलवेज डू द पब्लिक मैसेज. प्राइवेट में कभी कभी आपको रिप्लाई नहीं आएंगे, ऑलवेज डू द पब्लिक मैसेज. So go and get yourself these issues assigned. And काफ़ी सारे issues हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिए थे. And you can start contributing directly. काफ़ी सारे इसमें mainly मैंने front end वाले डाले हैं, but if you are interested in the back end, if you are interested in the CI/CD something, उसमें भी काफ़ी सारे good first issues हैं for you to start with and to understand. मैं सजेस्ट करूँगा कि कल जो मिश्री की मीटिंग है वो ज्वाइन कर सकते हो. And these are the call for actions, right? मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप ऐसे जाके contribute करो, but these are the call for actions, like go and contribute in that, go enjoy that. अगर आपको enjoy अच्छा लग रहा है तो contribute करो, नहीं लग रहा है तो मत करो. That's all. Be confident. Don't worry about like everyone is doing, I should also do. Don't worry about everyone is doing DSA, I should do. Don't worry about that everyone contributing to the open source, I should contribute. Ask yourself what you need to do. If you are confident on that, it doesn't matter what other people say. Research on that. You will be making mistakes, but appreciate that. I appreciate your mistakes also, right? And let's see what's left. Meet with meshmates. So actually what was a small story is that the layer 5 में मैं जनवरी को अब इस वेबसाइट में स्क्रॉल कर रहा था, and I see meshmates. And these meshmates are great people. They are a great mentor. And I was expecting like, how can I connect with them? Should I DM them? How can I ask them questions? Like मेरे पास काफी dumb questions, and I don't know they even connect with me. How I don't know they even like to like Shival Amma, he's a great engineer working on some great company. Lekin Lada, he's a great engineer working in the IBM. Gaurav Chete, he was a ex layer 5 engineer and right now working in I guess some great company. So जब आप ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट करते हो कि आप क्वेश्चन पूछोगे, you never expect yourself to be over there, right? You never expect कि आपकी भी फोटो वहाँ लगेगी, but I'm there. Like you can see my photo over there. Like I am one of the 6 meshmate in LFX, so you can connect with me at any time, and it's my responsibility to answer your questions, to make sure that you are comfortable to contribute in the project. So this is how things work. This is how projects works, right? मैंने काफ़ी mistakes की थी, and you also need to do mistakes. Without mistakes you cannot do anything. Go and make mistakes, and meet with meshmate is something a great program which layer 5 host, and जिसमें आप किसी भी meshmate से connect करते हो, जिससे आप बात कर सकते हैं. You can ask any questions. So I'm one of the meshmate, and you can connect with me at any time, right? Start connecting with other people. So he's the Lee Calcote. He's the founder of the layer 5. I'm talking with him. This was my first meet with him in March, I guess. At March I was talking with him. He connected with me because I was continuously contributing. I was continuously helping others. I was continuously making impact. So he thought, let's connect with me and appreciate the effort. And he gave me the part, how can I become the intern? How can I become much more than the intern? How can I be much more impactful, right? So like फिर meetings में मैं core meeting में join होने लगा, and since past year I'm joining the core meetings and suggesting things, and मैंने काफ़ी सारी meetings में बहुत सारी mistakes की हैं. I'm not a perfect guy, I'm not a perfect engineer. I made many of the mistakes and I learned a lot. So this is every time I'm highlighting this because you all guys going to make mistakes, and appreciate that, because that's how engineers learns. Yeah. And this is the last slide, how you can contribute to the open source programs. So in layer 5, any of the proposal doesn't work. Like आप चाहे इतना अच्छा proposal डाल देना, it will not matter. You will get rejected, and so you will ask question like, भैया मैं चाहे जैसे proposal डालूँ, then why will I get rejected? फिर मैं क्यों डालूँगा? Well, the thing matters is your work. ठीक है? So go on the Mishri, clone this project, work on this on 1-2 months, and make some great impact. Contribute, even small, grammar, something, make consistent.
आपने जो भी किया है उसको शेयर करो सबके साथ कि स्लैक में कि हे आई डिड दिस, आई सॉल्व दिस, हे देयर इज अ इशू। जो जैसे मान लो, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, छोटा सा टास्क लेके चलते हैं, ठीक है। अभी अभी अपन ने मिशरी.io में एक एरर देखा था, ठीक है। तो आप लोगों का एक टास्क मैं दे के चाहता हूँ आप लोगों को, ये इसके लिए इशू ना मैं क्रिएट नहीं करूँगा, आई होप वो इशू था, ठीक है, मुझे याद नहीं है, यहीं कहीं था, तो आप लोग जाके देख लेना, यहाँ कहीं इशू था ये मिशरी.io में, यस ये रहा, ठीक है। इसके लिए इशू मैं क्रिएट नहीं करूँगा, आप लोग जाइए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके इसमें सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो गिटहब लिंक मिल जाएगी इस वेबसाइट की, ठीक है। हाँ, ये गिटहब लिंक है, इस गिटहब पे जाओ, एक इशू क्रिएट करो कि यहाँ पर एक इमेज नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों का टास्क है, और ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, ध्यान रखना, दिस इज एन कॉन्ट्रीब्यूशन, and let me know how that works out, and let me know if you need help to solve that, if you are working on that or not. It doesn't matter if you work or not, but it is a contribution, right? So go and create an issue, and this is your task. So let's see who makes first issue. Okay, and then how Mishri will be participating in the LFX mentorship, Google Summer of Code, MLH, and Google Season of Talks. So what we expect from you, I already said that. आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे इतना ये मैटर करता है। लाइक मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने कोई प्रपोजल वगैरह कोई सबमिट नहीं किया है, ठीक है। मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में लगी थी LFX में, आई डिडंट सबमिटेड एनी काइंड ऑफ प्रपोजल, एंड आई जस्ट लाइक गूगल समर ऑफ कोड में भी मेरा हो गया था पिछले साल, मैं बस आई हेट इट, आई एक्चुअली गॉट द प्रपोजल टू सबमिट, मुझे सबमिट करना था लास्ट टाइम में, बट उस टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो आई miss that. So I miss the opportunity, but it doesn't matter. What actually I'm trying to convey is that it doesn't matter what is the proposal, because I'm the person right now who will expect your LFX mentorship. So I'm not trying to flex. I'm trying to say is that when I will be accepting, I will be not looking for any of your proposal. I will be not looking for whatever you have done in the proposal, whatever you have done in the past. What actually I will be looking, what you have done in the Mishri, right? So this is what actually matters. तो जाओ एंड हाँ, proposal sometimes proposals also matters, but mainly work is much more helpful for you guys to contribute. So LFX की internships start होने वाली हैं February में. Applications, make sure you go and apply. It doesn't matter even if you get selected or not, go and apply. गूगल समर ऑफ की कोड की भी एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली हैं, गो एंड अप्लाई। मेजर लीग की तो चलती ही रहती हैं, इसमें वो क्या करते हैं आपका, मेजर लीग हैकिंग में भी मैंने अप्लाई किया था, मैं लास्ट राउंड तक आ गया था, मेरे 3 इंटरव्यू हुए थे। तो इसमें आप ध्यान रखना, आप अपने प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट के अंदर आप अपने टेस्टिंग या उस प्रोजेक्ट के अंदर बैक एंड सर्विस, उस प्रोजेक्ट के अंदर फ्रंट एंड सर्विस आप अच्छे से डाल रहे हो प्रॉपरली। जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें मेक श्योर करना कि आपने ये सब चीज़ें करी हो, आपके MLH में सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। MLH इज़ अ ग्रेट प्रोग्राम, ये सारी की सारी स्टाइपेंड बेस्ड हैं, तो आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। बट जब भी आप कंट्रीब्यूट करो ओपन सोर्स में, नेवर एक्सपेक्ट एनी ऑफ द स्टाइपेंड, कभी मनी एक्सपेक्ट मत करना, ओपन सोर्स इज मेनली फॉर फ्री। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी ऑफ द स्टाइपेंड फ्रॉम द ओपन सोर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट हर्ट, सो मेक श्योर यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। गूगल सीजन ऑफ डॉक्स, अगर आप राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो गूगल सीजन ऑफ डॉक्स काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। यू नो वॉट, डॉक्स matters much more than what engineers do. So docs is something not a कोई छोटा काम नहीं है। लाइक मैं अगर इतना सा फीचर ऐड करता हूँ तो मुझे एक पेज पूरा डॉक लिखना पड़ता है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट। सो राइटिंग डॉक इज अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एंड मिश्री इज वन ऑफ द, मिश्री इज द टॉप LFX मेंटरशिप जिसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, तो या उसमें थोड़ा सा कंपटीशन है, बट एज आई सेड, जैसे जैसे आप कंट्रीब्यूट करोगे आपके लिए कोई कंपटीशन कभी आएगा ही नहीं रास्ते में। लाइक यू विल से दैट मुझे तो LFX मिल ही रही है भाई, तो वरी करने की, अवॉइड चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, मेरी गारंटी है। सो आई होप मे यू लर्न टुडे so many things, and I hope you can digest all of this, and I hope you enjoyed your Sunday. So this is all from my side, and thank you everyone for listening me,
And yeah, that's all from my side. Now I will be waiting for your questions if you have. Thank you, Yash, for your amazing session. I'm sure that after this, you all are ready to kickstart your journey in the field of open source. If anyone has any doubts, kindly use the raise hand option so that we may unmute you. Yes, Rudra, you may ask. Hello, Yash. Thank you for the session. I wanted to ask which language would be the best for open source? Anything, even HTML. Like even you can contribute in the HTML. Even you, like language is not the thing, right? So I have seen many of good contribution in the HTML. I have seen many of the contribution in the Java, HTML, Go, CSS. Many in any language you can contribute, like C++. Any language you can contribute. So it doesn't matter. I'm not kidding, right? Like HTML में मैं अगर सही में वाकई में इंजीनियर्स को ढूंढने जाता हूँ तो मुझे बहुत कम इंजीनियर्स मिलेंगे जिनको वाकई में अच्छे से HTML आती है. So if you are learning HTML, go and search in the Google projects on GitHub with HTML. Clone and fork that. आपने जो भी HTML से सीखा है उसमें लर्निंग अप्लाई कर दो एंड पुल रिक्वेस्ट रेस कर दो. CSS की बात आती है, CSS से कर दो. सो एंड आई विल सजेस्ट दैट इस चीज़ पे ध्यान मत दो कि किस लैंग्वेज को मुझे करना चाहिए जो ट्रेंडिंग में या बेस्ट है. लर्न व्हाट लैंग्वेज इज. लैंग्वेज में कितनी बैरियर्स हैं. एक अच्छा इंजीनियर हमेशा जानता है वो जिस लैंग्वेज में काम कर रहा है उसकी लिमिटेशंस क्या है. ठीक है. एंड फॉर एग्जांपल मैं गोलैंग में वर्क करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मेरी गोलैंग की लिमिटेशंस क्या हैं. जावास्क्रिप्ट पे काम करता हूँ, जावास्क्रिप्ट की लिमिटेशंस क्या हैं, कहाँ जावास्क्रिप्ट काम नहीं करती, कहाँ गोलैंग काम करती है, किस पर्सपेक्टिव में करना है. एक अच्छा इंजीनियर बनना आपके लिए मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो आई नो यू आस्क द क्वेश्चन दैट क्या बेस्ट रहेगा, बट आई विल सजेस्ट दैट कि आप जो भी सीख रहे हो आप उसको अप्लाई कर सकते हो. इवन इफ यू आर लर्निंग द C++, you can contribute by C++. So there is not a specific answer, I will say. Okay, thank you. Thank you, Rudraj, for asking the question. Any other questions? No, so let's move forward. Another exciting announcement for you all. Dive into the coding frenzy at Hackhazzards. IPU is one of the largest offline hackathon. Mark your calendars for March 3rd week, that is 16th and 17th March. We are doing something special and you are a part of it. And guess what? There are cool prizes, not just for the champs, but for everyone. Details coming your way soon. The prize pool is more than 50,000 with super cool goodies and swags. So get excited and buckle up to be a part of Hackhazzards more than a hackathon, in which you will explore, create, innovate, and win. Thank you everyone for your active participation. As we conclude this session, we urge each of you to embrace new challenges, continuously push your boundaries, and recognize that success transcends mere victories. It's about the transformative journey of growth and improvement. As we conclude this session, your enduring enthusiasm and passion have been truly inspiring. Thank you so much.